Transpiration. Topic number 4. Transpiration is the evaporative loss of water by plants. It occurs mainly through stomata, singular stoma. Besides the loss of water vapor in transpiration, exchange of oxygen and carbon dioxide in the leaf also occurs through these stomata. Normally, stomata are open in the daytime and closed during the night. The immediate cause of the opening or closing of stomata is a change in the turgidity of the guard cells. The inner walls of each guard cells towards the pore or stomatal aperture is thick and elastic. When turgidity increases within the two guard cells flanking each stomatal aperture or pore, the thin outer walls bulge out and force the inner walls into a crescent shape. क्रिस्चियन शेप आप देख सकते हैं इस डायग्राम में है, यहाँ पे ये क्रिस्चियन शेप बन गया है, क्रिस्चियन शेप. द ओपनिंग ऑफ द स्टोमा इज ऑल्सो एडेड का मतलब होता है हेल्प करना ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स. सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर ओरिएंटेड रेडियली रादर दैन लॉन्गिट्यूडनली. ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स सेलुलोज का बना होता है. सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर ओरिएंटेड रेडियली रादर दैन लॉन्गिट्यूडनली मेकिंग इट ईजियर for the stomata to open. When the guard cells lose turgor due to water loss or water stress, the elastic inner walls regain their original shape. The guard cells become flaccid and stoma close. Usually, the lower surface of a dorsiventral, often dicotyledonous, leaf has a greater number of stomata, while in an isobilateral, often monocotyledonous leaf, they are about equal on both surfaces. Transpiration is affected. Transpiration is affected by several external factors: temperature, light, humidity, wind speed. Plant factors that affect transpiration include number and distribution of stomata, percent of open stomata, water status of the plant, canopy structure, etc. तो इसमें याद रखना है स्टोमाटल अपर्चर विथ गार्ड सेल्स में तीन चीज़ें. पहला गार्ड सेल्स में होता है माइक्रोफाइब्रस जो बना होता है सेलुलोज का, और इसमें होता है स्टोमाटल अपर्चर जो क्रिस्टेंट शेप का होता है. चलेगा. उसके बाद आता है द ट्रांसपायरेशन ड्राइवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. पहला कोहेसन म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब अपने में होगा वाटर में. एडिशन अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सर्फेसेस सच एज द सर्फेस ऑफ ट्रैकेरी एलिमेंट्स, मतलब वाटर रहेगा और सरफेस रहेगा. सरफेस टेंशन, water molecules are attracted to each other in the liquid phase more than to water in the gas phase. तो लिक्विड फेज में ज़्यादा सरफेस टेंशन होता है. ये तीनों का डेफिनेशन एक बार आया हुआ है नीट पे. These properties give water high tensile strength. तो वाटर में कौन सा होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ हाईली होता है. ये तीनों मिला करके हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है. एन एबिलिटी टू रेसिस्ट ए पुलिंग फोर्स and high capillarity, that is the ability to rise in thin tubes. In plants, capillarity is aided by the small diameter of the tracheal elements, the tracheids and vessel elements. The process of photosynthesis requires water. The system of xylem vessels from the root to the leaf vein can supply the needed water. But what force does a plant use to move water molecules into the leaf parenchyma cells where they are needed?
As water evaporates through the stomata, since the thin film of water over the cells is continuous, it results in pulling of water molecules by molecules into the leaf from the xylem. molecule पुल करेगा, मतलब एक मोती रहेगा, उसके ऊपर मोती रहेगा, उसके ऊपर मोती रहेगा, उसका पुल करेगा, तो मोती बाय मोती मतलब मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल जाएगा जाइलम. Also, because of lower concentration of water vapor in the atmosphere as compared to stomatal cavity and intercellular spaces, water diffuses into the surrounding air. This creates a pull. फिगर में देख सकते हैं. पहला जाइलम है और फ्लोएम है. इसका रास्ता पता है तो जाइलम सीधा सीधा इसमें पहले देख लेते हो. पैलिसेड है, फिर इसमें गार्ड है, गार्ड सेल है, स्टोमाटल पोर है, डिफ्यूजन इनटू सराउंडिंग एयर. तो वहाँ पर ज़्यादा अगर प्रेशर बन जाता है एयर का लीफ में तो वो बाहर की तरफ डिफ्यूज कर जाता है. ये फिगर है. वाटर मूवमेंट इन द लीफ. Evaporation from leaf sets up a pressure gradient between the outside air and air spaces of the leaf. The gradient is transmitted into the photosynthetic cells and on the water-filled xylem in the leaf. Measurement reveal that the forces generated by transpiration can create pressure sufficient to lift a xylem-sized column of water over 130 meters high. अब आता है ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ए कॉम्प्रोमाइज. ट्रांसपायरेशन हैज़ मोर देन वन पर्पस. इट पहला है टोटल 5 है. पहला क्रिएट्स ट्रांसपायरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स. दूसरा सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस. तीसरा ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. चौथा cools leaf surfaces sometimes 10 to 15 degrees by evaporative cooling. Maintains the shape and structure of the plants by keeping cells turgid. An actively photosynthesizing plant has an instable need for water. Photosynthesis is limited by available water, which can be swiftly depleted by transpiration. The humidity of rainforest is largely due to this vast cycling of water from root to leaf to atmosphere and back to the soil. The evolution of the C4 photosynthetic system is probably one of the strategies for maximizing the availability of CO2 while minimizing water loss. C4 plants are twice as efficient as C3 plants in terms of fixing carbon dioxide, making sugar. However, a C4 plant loses only half as much water as a C3 plant for the same amount of CO2 fix. हो गया.